Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the 17th chapter of Goodbye, Mr. Chips. And he sat in his front parlor at Mrs. Wickett's on a November afternoon in 33. It was cold and foggy, and he dared not go out. He had not felt too well since Armistice Day. He fancied he might have caught a slight chill during the chapel service. Merivale had been that morning for his usual fortnightly chat. Everything all right, feeling hearty. That's the style. Keep indoor. This weather, there is a lot of flu about. I wish I could have your life for a day or two. 1933 में नवंबर की एक दोपहर को मिसेस विकेट के यहाँ सामने की जानिब वाली बैठक में बैठा था। मिस्टर चिप्स की बात हो रही है। मौसम सर्द और कोहरा आलूद था और उसने बाहर जाने की ज़रूरत ना की। जंग बंदी के दिन से इसने ख़ुद को अच्छा महसूस नहीं किया था। उसने ख्याल किया कि गिरजा में इबादत के दौरान शायद उसे हल्की सी ठंड लग गई थी, सर्दी लग गई थी। मैरीवेल जो कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और डॉक्टर है, वो उस सुबह अपनी मामूल के मुताबिक हर 15 दिन बाद जैसे वो उससे गपशप लगाने आता था और उसका हाल चाल पूछने आता था, इसी नीयत से वो आया हुआ था। सब खैरियत है ना, ये मैरीवेल उससे पूछ रहा है। खुश तो हो ना, ये हुई ना बात, इस मौसम में अंदर ही रहना। काफ़ी ज़ुकाम फैला हुआ है, काश मुझे 1-2 दिन तुम्हारी तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए मिल जाएं। His life, यानी मिस्टर चिप्स की लाइफ की बात हो रही है। His life, and what a life had been. The whole pageant of it swung before him as he sat by the fire that afternoon. The things he had done and seen, Cambridge in the 60s, Great Gable on August morning, Brickfield at all times and seasons throughout the years. उसकी ज़िंदगी यानी मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी, और क्या शानदार ज़िंदगी रही थी। ये उस ज़िंदगी का तमाम दिल फ्रेब मंज़र उसकी निगाहों के सामने घूमता रहा। जैसे वो इस दोपहर को आग के करीब बैठा, वो सारी चीज़ें याद आने लगीं जो इसने सरंजाम दी थी और देखी थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1960 से 1969 का दरमियानी ज़माना, अगस्त की एक सुबह को ग्रेट गैबल की सैर और सालों पर मुहित ब्रूकफील्ड में गुजरे हुए तमाम मौसम और अदवार और मौसम, ये सारी की सारी चीज़ें मिस्टर चिप्स को याद आ रही थी। एंड फॉर दैट मैटर द थिंग्स ही हैडंट डन एंड वुड नेवर डू नाउ, ही हैड left them too late. He had never traveled by air, for instance, and he had never been to a talkie show. So that he was both more and less experienced than the youngest boy at the school might well be, and that paradox of age and youth was what the world called progress. और साथ ही वो चीज़ें भी जो उसने कभी नहीं की थी और ना ही अब इन्हें करेगा, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी पीछे छोड़ आया था। मिसाल के तौर पर उसने हवाई जहाज़ के ज़रिए कभी सफ़र नहीं किया था और कभी थिएटर भी नहीं गया था। चुनाचे वो स्कूल के सबसे नौउम्र यानी छोटे लड़के के से बैक वक्त ज़्यादा कम तजर्बाकार था, और ये के बुढ़ापे और जवानी का यही तजाद है ही वो चीज़ थी जिसे दुनिया तरक्की कहती थी। Mrs. Wickett had gone out visiting relatives in a neighboring village. She had left the tea things ready on the table with bread and butter and extra cups laid in case anybody called on such a very day. However, visitors were not very likely. With the fog thickening hourly outside, he would probably be alone. Mrs. Wickett एक करीबी गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बाहर गई हुई थी और वह चाय की चीज़ें तैयार करके मेज़ पर छोड़ गई थी,
और साथ में रोटी, मक्खन और इजाफी कप भी रख गई थी कि शायद कोई शख्स मिलने आ जाए तो वो इस सूरत में काम आ सकें। ताहम इस दिन मुलाकातियों के आने का ज़्यादा इम्कान नहीं होता था। बाहर कोहर यानी धुंध हर घड़ी गहरी होती जा रही थी और वह तवक्को कर रहा था कि गालिबन कि आज वो तन्हा रहे। बट नो, about 3:15, a ring came and Chips answering the front door himself, which he oughtn't to have done, encountered a rather small boy wearing Brickfield cap and an expression of anxious timidity. Please, sir, he began. Does Mr. Chips live here? Umph, you'd better come inside, Chips answered, and in his room. A moment later, he added, I am Umph, the person you want now. What can I Umph do for you? मगर नहीं, तकरीबन 3:45 बजे घंटी बज उठी और चिप्स जवाब देने के लिए खुद दरवाजे पर गया, जो उसे नहीं करना चाहिए था। वहाँ से इसका सामना कदरे छोटे कद के एक लड़के से हुआ जिसने ब्रूकफील्ड की टोपी पहनी हुई थी और जिसके चेहरे पर तशवीश और शर्म का मिला जुला तासुर था। माफ़ कीजिएगा जनाब, वो बोल पड़ा, क्या मिस्टर चिप्स यहीं रहते हैं? You had better come inside, Chips answered, and in his room a moment later he added, I'm the person you want. Now what can I do for you? I was told you wanted me, sir. बेहतर है तुम अंदर आ जाओ, चिप्स ने जवाब दिया और अपने कमरे में एक लम्हे के बाद उसने कहा कि मैं ही हूँ वो शख्स जिससे तुम मिलना चाहते हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मुझे बताया गया था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं जनाब। यानी उस बच्चे के साथ मजाक किया गया था। चिप्स स्माइल्ड एंड ओल्ड जोक एंड ओल्ड लेग पुल, and he of all people, having made so many old jokes in his time, ought not to complain, and it amused him to keep the joke as it were with one of his own, to let them see that he could keep his end up even yet. So he said, with eyes twinkling, quite right, my boy, I wanted you to take tea with me. Will you sit down by the fire? I don't think I have seen your face before. How's that? चिप्स मुस्कुराया और एक पुराना मजाक और एक शगुफ्ता फरेब और इसे जिसने सब लोगों से बढ़कर अपने वक्त में इतने ज़्यादा फरसूदा मजाक किए थे, कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। और वो इस चीज़ से महजूज होता कि उनके मजाक को जैसा कि होता था अपने किसी मजाक से मात दे, इन्हें दिखाए कि अभी भी उसका पलड़ा भारी है। चुनाचे उसकी आंखों में चमक पैदा हुई। उसने कहा, बिल्कुल ठीक मेरे बेटे, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ चाय नोश करो, पियो। क्या तुम आग के करीब बैठोगे? मेरा नहीं ख्याल कि मैंने पहले कभी तुम्हारी शक्ल देखी है। क्या ख्याल है? वो बच्चे से पूछ रहा है। बच्चा आगे से जवाब देता है, I have only just come out of sanatorium, so I have been there since the beginning of term with measles. मैं सिर्फ अभी अस्पताल से बाहर आया हूँ जनाब। मैं खसरा की बीमारी में मुब्तला था जब से ये तालीमी दौरानिया शुरू हुआ और मैं वहीं रहा हूँ। That's account for it. Chips began his usual ritualistic blending of tea from different caddies. Luckily, there was half a walnut cake with pink icing in the cupboard. He found out that the boy's name was Linford, that he had lived in a Shropshire, and that he was the first of his family at Brickfield. अच्छा, तो ये इसकी वजह है। चिप्स अपने मामूल के रस्मी अंदाज में मुख्तलिफ डिब्बों से चाय मिलाने लगा। खुशकिस्मती से अलमारी में अखरोट का बना हुआ आधा केक मौजूद था जिसके ऊपर गुलाबी शक्कर की तह जमी हुई थी।
इसे मालूम हुआ कि लड़के का नाम लिनफोर्ड है और ये कि वो शरॉपशायर में रहता है और ये कि ब्रूकफील्ड में आने वाला वो अपने ख़ानदान का पहला लड़का है। ये रिमेनिंग ये हाफ था, रिमेनिंग हाफ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।